So today's video is a sneak peek into how we go about diagnosing the different chronic pain pathologies that come to our clinic. Mainly today we'll talk about the knee pathologies. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार. आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल. तो हमारे पास जो नी पेन के पेशेंट्स आते हैं विथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनके लिए हम सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं करते. व्हाट वी डू इज अ स्पेशल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन of those patients, and this bedside USG evaluation of the knee gives a direct insight into the cause of that knee pain. So आइए देखते हैं हम किस तरीके से नी पेन की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं और उन पैथोलॉजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो आज हमारे पास वॉलंटियर है जिनके ऊपर मैं आपको नी स्ट्रक्चर्स यू अल्ट्रासाउंड में किस तरीके से दिखते हैं वो दिखाऊंगा. दिस इज अ लीनियर प्रोब दैट वी यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आवर नी स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are all the muscles that are present. Since this is a very young patient, the structure of the muscle is very good. Okay, in old age जो बड़ी उम्र के जो पेशेंट्स आते हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट्स आते हैं, उनमें जनरली हमें ये पूरी मसल्स वाइट कलर की दिखती है बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन और बिकॉज ऑफ द अट्रोफी ऑफ द मसल्स. और ऐसे पेशेंट्स में जनरली हम गुड फिजिकल रिहैब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. So this is the suprapatellar recess, this black line which is there, which is in continuity with your knee joint. This is the fat, and this is the quadriceps tendon that we see in this patient. So we can see a very good quadriceps tendon, and this is the fat, this is the suprapatellar recess. So whenever there is knee arthritis, there is knee inflammation, we will see a good collection of fluid in this space, which will tell us that there is an inflammation in this knee. Then if we'll just go down, we will see your patella bone. This is your patella bone, and in continuity will be your patellar tendon. Okay, we can also see the joint space. So here you can see, so this is your femur and this is your tibia. These are the two bones that form the knee joint. This is your knee joint. So we can see a very good knee joint space which is present in this patient, and this is the meniscus. So अक्सर हमने सुना होगा मिनिस्कल इंजरी हो गई है, पेशेंट को मिनिस्कस फट गया है. So this is the meniscus that is present between these two bones which acts as a cushion, and whenever there is tear in the peripheral parts of the meniscus, we can see the tears here. Then these are the ligaments, collateral ligaments which are present in this patient. Similarly, on the lateral side, we again have the joint space which is very well maintained. We have the ligaments, right? And if we want to see the cartilage, we can even see the cartilage of the knee joint. So here, this black kind of a railroad kind of a structure that you are seeing here is the articular cartilage. तो जो cartilage खराब होने की बात जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो it is this cartilage which basically is lost or it is degraded in the patients of knee arthritis. So आपने देखा किस तरीके से हम knee structures को बहुत easily अल्ट्रासाउंड के अंदर देख सकते हैं, देन उनमें कुछ पैथोलॉजीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आई विल जस्ट शो यू सम पैथोलॉजीज आल्सो व्हिच वाज प्रेजेंट इन मेनी ऑफ माय पेशेंट्स एंड व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अल्ट्रासाउंड कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पेशेंट्स. सो हियर इन दिस पेशेंट यू कैन सी, so this is the suprapatellar recess that I talked about. You can see this black thing, this is all fluid which is present inside the knee joint. So how beautifully we can identify knee inflammation, you can see here, right? So this is all fluid inside the knee joint. Similarly, in this patient, we can see the collection of fluid. We can also see this cartilage, you can see here. So the thickness of that cartilage is reduced to 1.5 millimeters, which should be normally around 2 millimeters. So this is the one sign that we'll see in the patients of arthritis. So this is one of my patients where you can see inside this collection there is this white thing. These are the calcifications, synovial calcification, which is seen in this patients. You can see very nicely how these calcifications are present. One more patient with knee osteoarthritis.
We can see good collection. We can see a lot of synovial. So this is the synovial lining, and we can see the hypertrophy of the synovial lining nicely here. Here we can also see the cartilage thickness, which has been reduced. So here it is only 1.5, here it is 2.1. So this is the medial component. So this patient is having medial compartment, single compartment osteoarthritis. This is a collection of fluid with lot of this debris which is there. So nicely you can see the collection of fluid, this synovial hypertrophy. This is the synovial hypertrophy. Nicely we can see it in this patient. And you can see the reduction in the joint space. There are a lot of osteophytes which we see on the x-rays also, which are all signs of high grade arthritis. तो आपने देखा कि किस तरीके से हम USG की मदद से हमारे मरीजों में एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर की, जिससे कि हमें पेशेंट के पेन की पैथोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाती है। अगर आप भी लंबे समय से नी पेन के दर्द से परेशान हैं और आपको डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा है, देन डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम डिटेल एग्जामिनेशन आपका कर सकें और आपके पेन का कारण ढूंढ सकें।